They did electrochemistry, then they did chemical kinetics, and then chemical kinetics. Chemical kinetics हो गया, and then they have gone to haloalkane halorine. Yes. ऐसे तो ट्रैक में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट? ये सुनो, it will get difficult. Or I think Fatima and Ahmed and Mariam, you all don't know what is going to be starting, right? Chemical kinetics हुआ है किसी क्लास में? Fatima? So for me, they started chemical kinetics. Okay. And it was not completed, but holidays started. Okay, what about Ahmed? Ahmed? Yes, Ahmed, what is going on in your school? Yeah, this is me. Sir, chemical kinetics. Chemical kinetics हुआ है, ठीक है, चलिए, so we will start with chemical kinetics then. Mariam, if you can answer me. I think Mariam का इंटरनेट बहुत ही खराब है. 25 July. This is Monday. Okay. Chemical kinetics. In chemical kinetics, we will learn about rate of reaction, and we study how fast a reaction can go. How fast. So whenever we have something related to fast, that means we are talking about what? We are talking about the speed of reaction. Speed of reaction. The speed of reaction, sometimes you will see in other books, it is also known as velocity of reaction. Velocity of reaction. And in this chapter, specifically in CERT, it writes it as rate of reaction. Okay. Have you heard of this word? आलू का क्या रेट चल रहा है, प्याज का क्या रेट चल रहा है? We use this word rate in order to ask about price also. Yes or no? Have you heard this? Right? Yeah. Why do we use this word rate? Because see, and whenever you see this ना, चल रहा है ना, क्या रेट चल रहा है, इसका मतलब क्या है? They are asking according to time, with respect to time, how is the price changing? So anything which changes with time, we call this as rate. We call this as rate. Okay. So if speed is also what? It is the rate of change of position. It is the rate of change of what? Position. Because it is what? With time, it is getting different and different. With time, it is changing. Okay. In this case, you know what is speed? Simple speed is change in the position upon change in time. Yes or no? Correct? Yes or no? Now here the rate will be what? The rate of reaction will be change in the concentration of anything divided by change in time. Okay, change in concentration divided by change in time. And please remember, rate will always be positive. Okay, rate will always be positive. So we write rate of reaction. The first topic, rate of reaction. Rate of reaction. Sir, can you scroll up 1 minute? क्या लिखिएगा यहाँ पे आप? अच्छा लिखिए. लिखिए. Okay, sir, you can go back now. Go back? Okay. Yeah. Right, rate of reaction. Right, the first statement, what is rate of reaction? It is defined as the change in concentration of either reactant or product
per unit time, or product per unit time. We have a reaction, let us suppose A to B. Okay, A to B. Now A is getting reacted, so A will be disappearing. So we can write rate of disappearance of A. Rate of disappearance of A, it will be equal to what? Rate of disappearance. Please see very carefully. If I write change in A upon change in time, delta T. Small t is always for time, capital T is always for temperature. If I write delta A upon delta T, you must know that what is delta A? Delta A will be A final minus A initial. Now A final at the end, it will be equal to 0. So this delta A will be coming negative. Can you see that? Yes or no? Please tell me. Please focus here. Please concentrate here what I'm telling. If I write delta A upon delta T, then A final minus A initial. This is delta A. What is delta A? Delta A is equal to A final, the concentration at the final. At the end of the reaction, the complete reactant will be reacted, will get 0. And initial was some molecules of A were present. So we will get something in negative. And rate can never be in negative. That is why to compensate this negative coming in the delta A, we write a negative charge, negative sign here, not charge, sorry. Negative sign here. Is this clear? Yes or no? Please tell me. I got to drink water. Is this clear, guys? Yes. What about others? Ahmed, Fatima, Marie. Okay. Now this rate of disappearance can also be sometimes written as rate of consumption of A. Now, B is what? Rate, it is product. So it will be appearing. So we write this as rate of appearance. Rate of appearance of B. It will be equal to change in the concentration of B divided by the change in time. Now, if I write about the change in concentration of B, it will be B final minus B initial. B final will be what? It will be positive. B initial will be 0 because we don't have any reactant, any product at the starting. And that is why we don't have to add any sign here. We don't have to add any sign here. Now, both of these things are representing us what? Both of these things are representing what? Here we can say rate of appearance of A is equal to rate of disappearance of B. है ना? Because आप ये ध्यान रखें, if one molecule of A is reacting, it will give me one molecule of B. That is why the rate will also be equal. The rate will also be equal. Okay, so this is the first case, simple case. That means here I can write rate is equal to rate of appearance of A क्या है? Minus of delta A upon delta T, which will be equal to the change in the concentration of B upon the change in time. Clear? Yes or no? Please tell me. Is this clear? Yes. Yes, sir. Yes. Okay. लिख लिया आप लोगों ने? Let me know if you have written this down. This is one of the case. Okay. एक आप केस याद रखिए. When the stoichiometry is same. Done. Can I move forward? अरे लिख लिया कि नहीं लिखा आप लोगों ने भाई? इतना टाइम लगा रहे हैं. हाँ या ना तो बोल दीजिए. Done. Okay. Okay. Macha, Mariam, you are here. Okay, fine. Wafia, what happened? You got disconnected. Yes, sir, some internet issues. Internet issues. But you're still in Middle East, right? No, Or sir, India? I'm right now. Yeah. Okay, welcome to India. Screenshot लीजिए, screenshot. Done? Yes, sir. 5,
Take another screenshot here. Done, sir. Okay. Have they started chemical kinetics in your school? Yes, sir. अच्छा ठीक है. So we are going fine. सबके स्कूल में chemical kinetics हो रहा है. Mariam, what about your school? Have they started chemical kinetics or no? Yes, they have. Fine. Now see, let us look at the second type of reaction which can happen. A giving 2B. Now when A is giving 2B, then you can say that if I have 1A, if 1A is reacting, we are getting 2B. है ना? So we will write rate of appearance of B is equal to 2 times the rate of disappearance of A. Yes or no? Tell me. 2 is equal to 2 into 1. 1A is disappearing, 2B is forming. Yes or no? Please tell me. Can all of you see that? The rate of appearance of B is twice that of rate of appearance of A. Yes or no? Please see this. This is very important. Ahmed, Mariam, Sarah, Wafia, all of you, please look here and tell me, do you understand this equation? Yes or not? Yes, sir. Yes, all of you? Yes, sir. Okay. Now what I can write here? I will write here. What is the rate of appearance of B? It is delta B, change in the concentration of B upon change in time, which will be equal to 2 times the change in concentration of A upon change in time. Upon change in time. Okay. Now the rate is equal to, ये 2 को आप यहाँ पे लेके आइए. So rate will be equal to what? Delta A upon delta T, which will be equal. अच्छा नहीं, यहाँ पे एक negative sign होगा. Sorry, because it is reactant, there will be a negative sign. I forgot that. There will be a negative sign here. Now, if 2 comes here, it will be equal to what? 1 by 2 delta B upon delta T. Okay, so write this down. So what you can see here, when you have 2B, then its stoichiometry is coming as a denominator. Okay, and then we will write for the reaction AA plus BB, giving me CC plus DD. Equilibrium नहीं होगा, my bad. So for this reaction, we will write the rate. Okay. So what will be the rate equal to? We will write the rate is equal to first of all, this is 1 upon A minus of delta A upon delta T, which will be equal to minus 1 upon B delta B upon delta T, which will be equal to 1 upon C into delta C, because there will be no negative sign because it is product, upon delta T, which will be equal to 1 upon D, change in the concentration of D upon change in time. And you all will remember this equation here. All of you got this? Yes or no? Please tell me. How to write the rate of reaction? How to write the rate for any reaction, any given reaction? Yes or no? Please tell me. Yes. Okay. Also, please focus on one more thing, which is also very important. See, when I say that the rate of disappearance of, let us talk about A. So this part here with the negative sign, it is giving me what? It is giving me the rate of disappearance of A. Okay, not 1 by A. If I add 1 by A, if I multiply 1 by A, I will be getting the rate. Please remember that. Rate of disappearance of A will not change. It is still the same. What? The rate of disappearance of A, it is still equal to minus
delta A upon delta T, irrespective of the stoichiometry, Please remember this. Done, everyone? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay. Now, let us write for a reaction. N2 plus 3H2 gives me 2NH3. So the rate of reaction, if I want to write for this, it will be equal to rate is equal to minus. We have here coefficient 1. So nothing we will write. We'll just write minus delta N2 divided by delta T is equal to क्या आएगा यहाँ पे बताइए माइनस फॉर हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे फॉर हाइड्रोजन लुक एट दिस रिएक्शन एंड टेल मी ना अभी तो समझ में आ गया था आप लोग को बोलने में आप लोग को बोला नहीं जाता है सारा टेल मी 1/3 1/3 वेरी गुड फातिमा 1/3 देन डेल्टा delta H2 by delta T. H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू NH3 के लिए क्या लिखेंगे Minus one. वेट सिर्फ फातिमा ही बोले आप लोग को नहीं बोलना है मरियम सारा वाफिया प्लीज टेल मी व्हाट वी विल राइट हियर 1/2 delta NH3 by delta T. NH3 by delta T. Very good. Okay, so this is how we'll write the rates. Okay, how we'll write the rate. But still, if I ask you rate of disappearance of H2, this will be equal to what? Minus delta H2 without the 1/3 upon delta T. Okay. If I ask about rate of appearance of NH3, it will be what? Delta NH3 upon delta T. Write this down, then I will give you one question. Okay, right question. So for this, you will write the rate. The rate will be equal to what? And then click a photo, send it to me. Mariam, do you have my number? No, okay. So once you are done, you will take a photo and then send it to me on WhatsApp. सारा बैलेंस नहीं किया आपने रिएक्शन को देखिए Miss the 2 in the H2. हाँ देखिए ओके अदर थिंग्स आर फाइन अरे बाप आप इतना सजा के लिखती हैं सारा लाइक लेट मी शो यू गाइस Sara has written whatever is white is black for Sara. Okay,
if I'm writing rate, she has written this in black is equal to, is also in black. Then she has written negative sign is in blue, minus delta. Then she has written H2 upon delta T. Then she has put brackets in a different color. Oh my God. Oh, she has also given the line. This line is also in different color. Okay. Too much effort, Sarah. Expert. और एक है आपके पास फातिमा अंसारी, है ना? फातिमा, Yes, sir. she is writing is with pencils. क्यों पेंसिल से क्यों लिख रहे हैं आप? What फातिमा if भाई, what if it is wrong? Then you cut it like this. ऐसे देखिए, ऐसे एक चीज होता है जिसको ना क्रॉस करना बोलते हैं. क्या करना बोलते हैं फातिमा? क्रॉस. देखिए, if it is Right. wrong then you cross it, है ना? Yes, Fatima. Yes, sir. Okay. This is very important. If you are doing something wrong, then you just cross it. Why? Because later on, when you revisit for revision, then you will say that, okay, fine, this question was not done by me in the first attempt. I could not do this question in first attempt. So you will focus on that question more. Okay, so that is also very important. I have got only 2. What happened others? Wafia, Mariam, and Ahmed. Wafia and Ahmed, you have my number, right? Yes or no? Yes or sir. no? Yeah. Yes, तो sir. भेजिए फिर, कि करके भेजिए, जल्दी भेजिए. Yes, sir. अच्छा. वाफिया, न्यू नंबर. ओके. नहीं, देखिए वाफिया, you have done a mistake in rate of appearance of H2O. Rate of appearance of H2O, उसको क्या लेना देना है stoichiometry से? You are looking at something, at a reaction in which water is getting formed. If you don't even know the stoichiometry, then also you will be able to calculate the change in concentration of water and divide it by time. That is the rate of appearance of H2O. Okay, Wafia, you understood this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay, I think this is Mariam. What happened? You deleted a message. You sent the answer, then you deleted it. Send. Waiting for Mariam and Ahmed. अगर हम बात करें rate of disappearance of H2, so this will be equal to minus delta H2 upon delta T. No use of stoichiometry. Rate of disappearance of O2, delta O2 upon delta T. Rate of appearance of H2O क्या हो जाएगा? So this will be also minus delta H2 upon delta T, है ना? बट आपको ये नहीं दिखाना, आपको बस क्या बताना है, रेट क्या होगा. Rate will be equal to in terms of H2, O2 and H2O. अहमद एंड मरियम क्या हो गया? इतना लेट क्यों? अहमद, टर्न द माइक ऑन. हमको इस चीज से बहुत गुस्सा आता है. If I'm asking something, Yes, then you sir. either send it and or you say that I don't know, sir. बताइए हुआ या नहीं हुआ अभी तक आपका? Sir, 1 second, sir. नहीं अरे आपसे हाँ या ना पूछ रहे हैं, आप 1 सेकंड बोल रहे हो. हुआ या नहीं हुआ? Answer. Sir, I didn't do the last rate appearance for H2 and rate of disappearance. ये सब नहीं, ये हम तो मांग भी नहीं रहे ना आपसे, ये तो हम मांग भी नहीं रहे. आपने रेट लिख लिया, रेट इज इक्वल टू, हमने तो यही पूछा था ना आपसे. Rate is equal to in terms of H2, O2 and H2O. You have to write it this way. Yes, sir, that I wrote. Yes, Mariam, first of all, very good handwriting. Can you see this? You have missed that. You have missed the stoichiometry. So if you correct the stoichiometry, then you can write it.
अहमद आपने लिख लिया तो प्लीज भेज दीजिए. नो नीड ऑफ राइटिंग दिस. Oh, okay, sir. Yes, Mariam, you have done everything correctly. Just see here. This is 2H2 and then correct the answer. Yes, Mariam, समझ में आया नहीं आया? आया ना तो बोल दीजिए क्या हो गया. नहीं समझ में आया? Can you please turn the mic on? You can't. Is my voice clearly audible? Yes, sir. Okay. Mariam? So please turn the mic on. It will be fine. Don't worry. If you are not able to click there and turn the mic on, rejoin the class. Sometimes it happens that you are not able to turn the mic on. Okay, अच्छा इसके साथ ये प्रॉब्लम थी. अहमद, हाँ फिर वाटर के लिए कौन लिखेगा? अहमद, वाटर भी तो है. In terms of water also we have to write ना. Yes or no, Ahmed? Oh, yes. Yeah. भूल गए. अल्लाह, आई थिंक बेचारी मरियम डिस्कनेक्ट ही हो गई. Yes, Mariam. Yes, sir. सी इतनी अच्छी तो आवाज आ रही है आपकी. नाउ रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है ना, राइट मरियम? सो यू राइट माइनस हाफ in the change of concentration of hydrogen upon change in time, which will be equal to the negative of change of concentration of O2 divided by change in time. Yes or no? Which will be equal to half of delta H2O upon delta T. Right, Mariam? Yes, sir. आपने इस इक्वेशन, यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा था ना आपने अपने कॉपी में, यहाँ पे 2H2O नहीं डाला था. सो दैट वाज द मिस्टेक दैट यू हैड. ओके, नथिंग एल्स. चलिए इसको लिखिए. Write some remarks. Write the number 1 point. The rate of reaction is always positive. The rate of reaction is always positive. But the negative sign in the rate expression in terms of reactant shows the decrease in concentration with time. Right, next. Rate of reaction can be mathematically defined as rate of appearance or rate of disappearance
divided by the stoichiometric coefficient. Write this down. Let me know when you're done. Done, guys? Yes or no? Please tell me. No, sir. चलिए लिखिए. Done, Mariam. Okay. Mariam, I hope you are watching the previous lectures. Yes or no? Yes, Mariam. Sir, I haven't started any yet. Why? Why have you not started them? So I am done. Okay. Write a question. Sir, can you go up 1 second? Yeah, sure. मरियम रूटीन बनाइए. छुट्टी चल रही है ना मरियम? Yes, छुट्टियां sir. चल रही है तो रूटीन बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए. उसमें डेली एटलीस्ट आप, है ना, हाफ एन आवर सुबह में और हाफ एन आवर शाम में, या फिर 1 ही घंटा डेली देखते जाइए. तुरंत खत्म हो जाएगा. ठीक है, ज्यादा दिन का काम नहीं है वो. Okay, sir. I'll start it also. हाँ, सही सा एक रूटीन बनाइए. आप अभी कहाँ पे हैं? अच्छा, एक तो हाउ मेनी ऑफ यू स्लीप आफ्टर 12? रेज योर हैंड ना. आफ्टर 12, आफ्टर मिडनाइट. सारा, आप भी इंडिया में रहते हुए. ओके, सो अहमद एंड वाफिया आर द गुड पीपल हियर, गुड स्टूडेंट्स हियर. क्यों इतना लेट क्यों होता है? मरियम, फातिमा एंड सारा. हाँ, यू कैन लोअर योर हैंड्स नाउ. इतना लेट क्यों होता है? राइट. कंसिडर अ रिएक्शन. मिडिल ईस्ट वालों का यही हाल है. मिडिल ईस्ट वाले सुबह तक जागे रहेंगे, दिन भर सोते रहेंगे, शाम में जाएंगे लुलू. शाम में जाएंगे लुलू. आप लोग अगर इंडिया आए और आप लोग को लुलू की याद आए ना, तो लखनऊ में, आई थिंक, या इन लखनऊ दे हैव ओपनड अ लुलू. You can go there. Consider a reaction A giving to B if concentration of, यही करते हैं ना आप लोग मिडिल ईस्ट में रहने वाले. रात भर जागेंगे, दिन भर सोएंगे, and then they wake up at Maghrib and then they go to Lulu. If concentration of B increases from 5 mole per liter to 10 mole per liter in 2 seconds. In 2 seconds. Calculate A part, rate of reaction. B part, rate of appearance of B. C part, rate of disappearance of A. ठीक है.
सोल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, आई विल यू विल राइट इट डाउन, R इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम, इज इक्वल टू 1/2 of change in concentration of B upon change in time. ठीक है. Now what do you need? If you have this part, हाँ ये आपको दिया हुआ change in concentration of B is what, from 5 mole to 10 mole, right? So write delta B is equal to final delta B final. B final क्या है आपके पास? Concentration of B final minus concentration of B initial. So final is 10, initial is 5 moles per liter, which will be equal to 5 mole per liter, and delta T is equal to what? 2 seconds. Now rate of appearance of B will be equal to क्या हो जाएगा बताइए? What will be the expression for this? Rate of appearance of B is equal to, rate of appearance of B will be equal to how much? 5/2. कितना? 5/4. 5/4? अरे ये ऐसे आप ना डायरेक्ट ये क्यों बता रहे हैं? आप इक्वेशन पहले बताइए ना, नंबर्स मत डालिए. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी कैसे लिखिएगा? डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। वेरी गुड. ठीक है, आंसर ऐसे आंसर करने की कोशिश कीजिए. पहले अभी स्टार्ट हो रहा है ना चैप्टर. डेल्टा बी, तो डेल्टा बी कितना है आपके पास? 5. डेल्टा टी, दिस इज मोल पर लीटर अपॉन 2 seconds. This will be equal to 2.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड. रेट का आपके पास मिनट में आ गया. Since you have found the rate of appearance of B, now calculate the other things. Rate of reaction calculate कीजिए and rate of disappearance of A calculate कीजिए. मैथ से इसके बाद कुछ नहीं है. Try it once. थोड़ा सा स्ट्रगल कीजिए, आ जाएगा. अगर नहीं आया तो फिर तो हम हैं ही. और डरने की कोई बात नहीं, एक बार में नहीं आया तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, धीरे धीरे आ ही जाएगा. लेकिन ट्राई कीजिए, थोड़ा स्ट्रगल कीजिए. Then again, once you are done, you will click a photo and send it to me on WhatsApp. ठीक है. We'll do plenty of questions, don't worry. You know what, you guys are very lucky that P block is not coming in your CBSE examinations. The complete chapter P block is removed. That was a very big chapter and student mostly found it very difficult. Okay, what happened to Wafia? Wafia got disconnected again. फातिमा हो पा रहा है? इस फातिमा Yes, sir. हो रहा है कि नहीं हो रहा है? I'm trying. I'm sending you the first part. अच्छा अच्छा ठीक है, भेजिए भेजिए. Okay, Fatima. Let us see. नहीं, डेल्टा ए कहाँ से मिला आपको? आपने सिर्फ तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी लिख दिया ना. डेल्टा ए कहाँ से मिला फातिमा? यस फातिमा. Yeah. इस इक्वेशन का इस्तेमाल कीजिए ना.
you will get the rate. Use this equation. This is your go-to equation for everything. Okay. अच्छा किसी और का आंसर आया है? सारा. सारा correct है. And what will be the rate of disappearance, सारा? उसमें numbers तो आप plug in कर सकते हैं ना? You have given everything, right? Try कीजिए. I'll give you some more time. Ahmed, what about you? Ahmed? Sir, I'm just sending, sir. हाँ भेजिए. फातिमा कुछ स्ट्राइक कर रहा है? कुछ स्ट्राइक कर रहा है Yeah, नहीं I कर रहा है? can use instead of minus delta A by delta T, I can use 1 by 2 करेक्ट. delta. हाँ वही एग्जैक्टली करेक्ट. हाँ कीजिए. सही जा रहे हैं आप. अहमद यस करेक्ट. लेकिन आपने ये 1.2 पे क्यों छोड़ दिया है? डिवाइडेड कंप्लीटली ना अहमद? Sir, what, sir? डिवाइडेड कंप्लीटली ना? Oh, okay, sir. डिवाइड कीजिए इसको. डिवाइड नहीं किया आपने पूरा भी. ओके Sir, can you check what I sent? देख रहे हैं. अरे बाप रे. फातिमा अब डिवाइड कीजिए तो बिल्कुल चुपचाप से. आपने क्या लिखा है यहाँ पे उसको वो गलत है. क्यों गलत है आप खुद बताइएगा. मैथ्स में गलत है और मतलब एकदम बहुत ज्यादा गलत है. ओके फातिमा Yes, sir. आप सर पकड़ लीजिएगा. आपने इतना ज्यादा गलत है. मैथ्स देखिए आप जो आपने कट किया है ना उसको देखिए. केमिस्ट्री सही है मैथ गलत है. हाँ अच्छा ठीक है. यस माइनस डेल्टा ए. अरे भाई साहब ओहो, सारा आपने क्या लिख दिया? लेट अस सी ना. सारा टेल मी रेट ऑफ disappearance of A will be equal to क्या होगा? What will be this equal to? minus delta A by delta T. Minus delta A by delta T. Is this equal to rate? Yes or no? Yes, sir. This is equal to rate. And is this not equal to half of the rate of appearance of B? देखिए ये क्या है आपके पास? What is this thing? Tell me. Rate of appearance of B. Right. This is the rate of appearance of B. है ना? बस अब हो गया ना सवाल. So we have got this part. This is equal to half of rate of appearance of B is what? 5 into है ना? नहीं rate of appearance 2.5 आया. Sorry, my bad. Rate of appearance we have got it as 2.5. तो रेट क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 2.5 upon 2 and this rate of disappearance of A also will be equal to 2.5 by 2. Plus this is also equal to this. This is rate and this is rate. आपके पास Yeah, so my answer was right. yes tell me. So my answer was right. No. हाँ आपके आंसर तो सही है लेकिन आपने ये क्या लिखा? माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू I just 2.5 by 2. equated ये it.
ये क्या डरा रहे हैं क्या आप किसी को? यहाँ ये क्या किया आपने? into delta t not equal to. अच्छा वो इनटू है, ठीक है, अच्छा ठीक है। इन ये है क्या? देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर दिस ना, ठीक है कि नहीं? Yes sir. फिर से आपने फिर से डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया है, वो आपने वहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब देखिए, लिसन वेरी केयरफुली, we have here what you will write. First of all, the first thing that you are going to do is you will write r is equal to minus of, क्या था हमारे पास, delta a upon delta t, which is equal to 1 by 2 of delta b upon delta t. If you have been given the change in concentration of delta b, है ना, change in concentration of b. So what we will write, first of all, we will write this part. What is this part? This part tell me about the, just this part, avoid the stoichiometry. This part tell me about the rate of appearance of b, है ना. And what does this part tell me? This part tell me the rate of disappearance of a. Okay, तो जो दिया हो आपको, सबसे पहले उसका रेट ऑफ अपीयरेंस निकाल लीजिए, and from that what you will calculate, from that you will calculate the rate, and then you can calculate each and everything. Once you have calculated the rate, you can calculate each and everything. Please remember this. Right, another question. Reaction is N2 plus 3H2 giving 2NH3. Okay, if the concentration of NH3 increases by 5 mole per second, 5 mole per liter, wait a second, 5 mole per liter in 2 seconds. Calculate number A, rate of reaction. Number B, rate of appearance of NH3. Number C, rate of disappearance of H2 and N2. ठीक है, चलिए कीजिए इसको, है ना. सबसे आपको पता लग गया ना क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द होल रेट एक्सप्रेशन, देन यू विल आइडेंटिफाई दैट स्पीशी जिसके लिए आपको इंफॉर्मेशन गिवन हो, है ना. फॉर व्हाट वी हैव बीन गिवन द इंफॉर्मेशन, देन यू विल राइट द रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशी, एंड देन यू विल कैलकुलेट द रेट फर्स्ट, उसके बाद सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा. ओके, ट्राई इट वंस मोर, देखते हैं ये सवाल कितने लोग कर पाते हैं. ओके, मरियम हैज सेंट मी. मरियम आपका आंसर आया कि नहीं आया फॉर द प्रीवियस वन? मरियम आ गया. सो फॉर द प्रीवियस वन, हम लास्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, प्लीज देख लीजिए. रेट जो आएगा ना, रेट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1.25 moles per liter per second. This is for the previous one. The same thing will be the rate of disappearance of A. ये भी आपका कितना होगा, 1.25 moles per liter per second. This is for the last question. And rate of appearance of B तो हम लोग को निकल ही गया था, that was the twice, that is equal to 2.5 moles per liter per second. Calculate for this NH3
Okay, I've got from Fatima. इसके बाद क्या करना है? Okay, Fatima, can you see the whole rate expression where you have written rate is equal to minus delta n2 upon delta t is equal to minus 1 upon 3 delta h2 upon delta t is equal to 1 by 2 delta ns3 upon delta t? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay. In that, can you identify where is the rate of appearance of ns3? Yeah. Identify कर पा रहे हैं वहाँ पे? In which part you Yeah. have, है ना? So you can plug in Yes. whatever value you have got instead of that delta ns3 upon delta t, right? Yeah. Right. And Yeah. if you will plug in the value there, you will get the rate. है कि नहीं? Because rate is equal to what? Half into the rate of appearance of ns3, correct? Oh, yeah. Yes. Okay. चलिए, those who are stuck, please send it whatever you have done till now. सारा रेट ऑफ अपीयरेंस किसका होगा? ठीक है, चलिए ns3 का एक ही यहाँ पे है तो कोई बात नहीं. अच्छा, you don't know what to do next, सारा? I'm doing. You're doing? अच्छा ठीक है, कीजिए कीजिए. What about Ahmed and Wafia? Ahmed and Wafia? Sir, I'm doing the C part. C part, okay. So I got rate of appearance of NH3, but then after that, I don't know what to do. अरे तो बताया तो आपको क्या करना है. रेट ऑफ रिएक्शन मिला कि नहीं? Of NH3, I got रेट ऑफ रिएक्शन मिला कि नहीं, ये बताइए आप. 9. क्यों नहीं मिला? अभी तो आपको हमने समझाया था. अरे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ns3 दिख रहा है आपको रेट वाले पूरे एक्सप्रेशन में? यस और नो? अरे ये है कि नहीं, आप बताइए. What I am writing is, have you written this? Yes or no? Rate is equal to half of delta ns3 upon delta t. ये है Yes. कि नहीं है? और इसकी Yes. वैल्यू आपको पता है कि नहीं है? But I have Yes. circled. तो फिर क्यों नहीं पता आपको रेट ऑफ रिएक्शन? निकालिए रेट ऑफ रिएक्शन फिर. Sarah, in the examination, you can't leave 2.5 upon 2 as 2.5 upon 2. You have to simplify that. I hope you know. Yes, Sarah? Yes. हाँ ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा.
Acha, one more thing. Now, whatever you have calculated, rate of disappearance of what? H2 या N2? हाँ, ये बहुत ही गलत लिखा है आप लोगों ने. I don't know why you are not understanding it. Please turn your mic on, all of you. बताइए, rate is equal to, एक सेकेंड, रिएक्शन हम फिर से लिख देते हैं यहाँ पे. What was the reaction? N2 plus H2 gives me NH3. Sir, तो it's 3 हो 3H2. जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा. ठीक है, अरे हाँ हाँ, बैलेंस कर लेंगे. ओके, रेट बताइए. रेट इज इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, which will be equal to minus 1/3 delta H2 upon delta T, which will be equal to 1/2 delta NH3 upon delta T. Clear है? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ये क्या है बताइए? What is this? What is this? नहीं पता. Rate of Rate of disappearance of N2. disappearance of N2. ये क्या है? Rate of Rate of disappearance of disappearance H2. और what is this? Rate of appearance of NH3. Okay. Appearance of N2. Rate of disappearance of H2. This is rate of disappearance होगा यहाँ पे भी. Appearance of NH3. This is with the negative sign है ना, इसको इंक्लूड कर लीजिएगा. आप लोग किस तरह से इंक्लूड करें इनको? ये तो यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है, अभी बताइए इन दोनों में. बताइए N2, H2 और NH3 के में फॉर विच यू हैव बीन गिवन द इंफॉर्मेशन. टेल मी, किसके बारे में दिया हुआ इंफॉर्मेशन? NH3. NH3. So what we will calculate? We will calculate the rate of appearance of NH3. Tell me, rate of appearance of NH3 is equal to what? Please turn your mic on and tell me. Ahmed, Fayaz, Ahmed आप भी नहीं बोल रहे, मरियम भी नहीं बोल रही, वाफिया भी नहीं बोल रही है. Sir, it is equal to 2.5 mole liter inverse. It is Mole per equal to liter. delta NH3 upon delta T, which will be equal to 5 moles per liter upon 2 seconds, which will be equal to 2.5 moles per liter per second. ठीक है, एक बात बताइए आप, जो रेट होगा that will be equal to this whole thing. Yes or no? Please tell me. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yeah. Tell me. So tell me rate in terms of NH3. Rate is equal to, in terms of NH3, it will be equal to what? बताइए. Rate will be 1 equal by to 2 into 2.5. 1/2 into delta NH3 upon delta T, that we have got as 1/2 into 2.5 mole per liter per second, which will be equal to 1.25 moles per liter per second. ये हमारे पास क्या आ गया? रेट आ गया. yes or no? रेट आ गया. अब ये बताइए आप, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं? इन दोनों को कर सकते कि नहीं कर सकते? बताइए. In terms of N2, tell me what is rate in terms of N2. In terms of N2, rate is equal to minus delta N2 upon delta T ना. yes or no? Yes, sir. Yeah. Yes. ठीक है. Now what is rate equal to? rate का क्या है हमारे पास? 1.25. ठीक है, moles per liter per second. It is equal to what? Minus delta N2 upon delta T. यही क्या है आपका? This is what? Rate of disappearance of N2. है कि नहीं है? Yes, sir. 1.25 moles per liter per second.
ठीक है, अब बताइए H2 के केस में रेट इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ H2 रेट इज इक्वल टू व्हाट? -1/3 delta Minus- H2 by delta T. अच्छा ये बताइए व्हाट इज रेट इक्वल टू? 1.25 इज इक्वल टू -1/3। इसको क्या लिख सकते हैं हम? -1/3 नहीं, 1/3 लिख लेते हैं। माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T को क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2, है ना? तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2 will be equal to 3 into 1.25 moles per liter per second. समझ में आया नहीं आया? yes नहीं, कीजिए कीजिए तब समझ में आया तो। ओके अहमद, आई हैव रिसीव्ड योर रेट ऑफ रिएक्शन। सही है। हाँ, दो ही चीज निकाला आपने, बाकी दो चीज नहीं निकाले। दो चीज निकालिए। ओके मरियम, आई हैव रिसीव्ड योर्स बट आई डोंट नो appearance of NH3 सही है। You have to plug in the values, plug in the values. How many of you can do the questions right now? Raise your hand. Nobody Sir, what can. is it? How many of you can do the question now? Once I have explained this. Complete कीजिए ना सवाल को, सबने complete नहीं किया है। You still have to give me क्या क्या चीज आपको बताना है। You have found, all of you have got what? Rate of appearance of NH3. B, you will tell me what is rate of reaction. C, you will tell me rate of disappearance of H2. D, you will tell me rate of disappearance of N2. ये आप लोगों का कितना आया? 2.5 moles per liter second inverse. What is rate of reaction? Rate of reaction is equal to 1.25 moles per liter per second. ये दोनों बताइए आप लोग। फातिमा अब भी आप नहीं कर पाएंगे, यू डिड नॉट रेज द हैंड आई थिंक। हाँ फातिमा, sir, I didn't understand. आपको समझ नहीं आया? नहीं, क्यों नहीं समझ में आया? अरे इसमें क्या नहीं समझ में आया? अरे कितनी दफा हम बता, अभी तो सारा क्या हुआ आपको समझ में नहीं आया? ये जो सारा हमने कैलकुलेट करके दिखाया है ये समझ में नहीं आया आपको? फातिमा लास्ट का पार्ट नहीं समझ में आया। ध्यान से देखिए, बताइए फिर से बताइए। रेट इज इक्वल टू, फिर से बोलिए क्या है? माइनस Delta N2 by delta T is equal to -1/3 into delta H2 by delta T is equal to 1/2 delta NH3 by delta T, delta T. आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है? रेट मिला हुआ आपको? बताइए, रेट है आपके पास कि नहीं है फातिमा? Yes, किसका रेट है आपके पास? NH3 का। नहीं, रेट ऑफ होल रिएक्शन है ना आपके पास कि नहीं है, ये बताइए आप। रेट जब हम पूछ रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन आई एम आस्किंग। इफ आई एम आस्किंग रेट ऑफ अपीयरेंस देन यू विल से रेट ऑफ अपीयरेंस किसका। इफ आई आस्क रेट ऑफ डिसअपीयरेंस देन यू विल आस्क रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका। बट व्हेन आई आस्क रेट ऑफ रिएक्शन, डू यू हैव द रेट ऑफ रिएक्शन? यस और नो फातिमा? No. नो, यू डोंट हैव। Is it ठीक है, ठीक 2.5? है, ठीक है, छोड़ दीजिए। नहीं है आपके पास। आपके पास क्या है वो बता दीजिए आप। व्हाट हैव यू कैलकुलेटेड टिल नाउ? NH3 का rate And- of
appearance. ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 कितना आया है आपके पास? 1.25. कैसे 1.25 आया है? ये तो ये होगा ना डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी होगा ना फातिमा? Yeah. तो डेल्टा NH3 कितना है? 5. डेल्टा टी कितना है? 2. So it will be 2.5. 2.5 आएगा ना? Yeah. ठीक है, ध्यान है यहाँ पे कि नहीं ये बताइए आप लोग, ध्यान है? Yes. Yes. पूरा है? हाँ. ठीक है, थर्ड टाइम आई एम टेलिंग यू, ये जो पार्ट है आपका, व्हाट इज दिस? Rate of appearance of NH3. ठीक है, and if I multiply half, this will be equal to rate of reaction, yes or no? Rate of reaction. This whole thing is rate of reaction, yes or no? Yes. Including the half. है Yes. हाँ, पक्की बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो रेट निकल नहीं जाएगा अब आपसे? अरे ये हम लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताइए। लिसन, रेट इज इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। आपके पास ये वैल्यू है? डू यू हैव दिस वैल्यू? Yes. कितना है? 2.5. प्लग इन कीजिए और रेट बताइए कितना आ रहा है। ये समझ में आया नहीं आया ये बताइए। Yes, sir. आ गया पक्की बात? Yeah. कीजिए और रेट It's बताइए तुरंत। 1.5. 1.25. मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसी को Yeah. कोई दिक्कत यहां तक अभी? प्लीज टेल मी नाउ। मरियम, वाफिया, अहमद? No, sir. नो। Yes, sir, understood. ओके, रेट याद रखिए कितना आया हमारे पास। रेट इज इक्वल टू 1.25 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हटाइए आप। कैन वी से दैट रेट इज इक्वल टू दिस मच? हाँ या Yes. ना? Yes, sir. ठीक है, व्हाट इज दिस? Rate of disappearance of N2. निकल गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 कितना आ जाएगा? 1.25. आ गया? कोई दिक्कत? यही समझा रहे थे ना हम। और एक बात बताइए आप, इसको हटाइए यहाँ से। अब आप इक्वेट कीजिए इन दोनों को। टेल मी नाउ, ये पार्ट आ जाएगा डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, कितना हो जाएगा? Sir, but what is delta H2 upon delta T? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। But we don't have that. So we just have to calculate 1/3 into 1.25. 1/3 इंटू नहीं, 3 इंटू 1.25। Yeah. ये तो कैलकुलेट करना है ना आपको। यू हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, ये कैलकुलेट करना था आपको, हाँ या नहीं? Yes, yes, yes. तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, 3 इंटू 1.25। अरे आया? हाँ हाँ, यस यस यस, आप पहले 5-10 मिनट पहले ही बोली थी। आया कि नहीं आया ये बताइए आप, Yes, sir. पक्की बात? Yeah. कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है सबका आंसर। हम नहीं करेंगे कुछ कैलकुलेट, ठीक है? आंसर बताइए अब आप लोग, कैलकुलेट कीजिए। सारा, आई एम चेकिंग योर आंसर्स नाउ। डिसअपीयरेंस ऑफ N2 सही है, करेक्ट सारा। वाफिया एंड मरियम प्लीज, you got it, yes or no? Tell me, वाफिया एंड मरियम। मरियम आपको समझ में आया? ओके अहमद, आई गॉट योर आंसर। ओके, कैलकुलेट दिस थिंग्स एंड टेल मी आंसर्स।
Rate of disappearance of H2 and rate of disappearance of N2. Tell me the answer for C and D. क्लीन रखिए कॉपी किताब को, तभी आएगा बिल्कुल, ठीक है? क्लीन रखिए. You should know what each and everything means, and you should be able to manipulate the whole equation. In the expression we can make multiple, एक expression है rate का, उससे multiple equations बन सकते हैं. So you have to understand that math there. I'm waiting for answers for C and D. What will be the rate of disappearance of N2? I think people have given the answer for rate of disappearance of H2. The rate of disappearance of N2 is 1.25 and rate of disappearance, no, for H2 is, N2 only. Then for H2 it आपने is लिखा नहीं है, लिख के नहीं कर रही हैं आप, यानी है ना? 0.25. आपने लिख के नहीं किया है, राइट? Show me what you have हाँ, written till now. दिखाइए, फोटो भेजिए आप. Please send me your answers, okay? Wafia and Mariam, you too. Send me your answers. Acha, by the way, Wafia, should I save this number now? Wafia? So I send mine. देखिए फातिमा, हम आपको बता रहे हैं क्यों आपसे गलती होती है, आपको मिस्टेक कहाँ पे होता है. You have written 1.25 is equal to -1/3 into delta H2 upon delta T. ठीक है, उसकी इक्वल टू आपने क्या लिख दिया है? 3 into 1.25. बताइए, इज दिस मेकिंग सेंस? Yes, sir. तो फिर पक्की बात है ना, जब आप बाद में पढ़िएगा तब भी आपको, आप यहाँ पे आके अटक सकती है ना कि यहाँ पे ये क्या हो गया, टी कहाँ से आ गया. Okay, Wafia. Listen, you're going to write it like this. Implies that. Equations में, और बिल्कुल अब हम गलती नहीं देखना चाहते. जब भी हम गलती देखेंगे आपको हम कटवाएंगे आंसर को, ठीक है? फिर से लिखवाएंगे. यहाँ पे you will write, see this is the part you will write, ऐसे आप सर्कल कर लीजिए इसको. And rate of disappearance of H2. You'll write a rate of disappearance of H2 with the negative sign है ये, ठीक है? ध्यान रखें नेगेटिव साइन के साथ. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे आपने इसको ले लिया है, 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप. 3 into 1.25 moles per liter per second. It will be equal to 3.75 moles per liter per second. समझ में आया फातिमा? ये सनो प्लीज टेल मी Yes, sir. कैसे करना है, ठीक है? इक्वेशंस को आप इस तरह से ऊपर से नीचे लेके आइए, ठीक है? इधर मत लेके जाइए. You just have to manipulate, okay? सवाल लिखिए. You have been given a reaction. Consider the reaction. Consider the following reaction. Here you have 2A plus 3B giving 5C plus 2D. ध्यान से कीजिएगा, ओके? बहुत आसान होता है ये सारे सवाल, कुछ नहीं है इसमें. इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन देयर इज नथिंग. आई डोंट नो आप लोग को एक बार में अब समझ में आ गया कि नहीं आया? फातिमा, टेल मी नाउ. सारा, Yes. all of you understood it? Yes or no? It is not tough, okay? These things are not tough. एक बार क्लिक हो जाना चाहिए बस. साफ साफ लिखिए, बस आ जाएगा आप लोग को. नंबर 1, you have to calculate rate of, अच्छा wait a second, consider the following reaction and they have given you something. What they have given?
if rate of appearance of C is 1.25 moles per liter per second, calculate what you have to calculate. Number one, rate of reaction. Number two, rate of disappearance of B. Number three, rate of appearance of D. Calculate this. Rate of reaction calculate करके send me the answer. Send me if you have calculated the rate of reaction. सारा Yes, sir. आपने लिखा है सबसे पहले रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज इक्वल टू 1.25, ठीक है। Yes, sir. उसके नीचे आपने क्या लिखा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ठीक। Yes, डेल्टा sir. सी
तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी तो क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी ही तो होता है। फिर अपने 5 से 5 कहाँ से आ गया? I took the 1/5 on the other side and multiplied it. रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में स्टोइचियोमेट्री आती है कि नहीं आती है, ये बताइए आप। नहीं रेट आती। ऑफ, तो फिर क्यों लिया है आपने? आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी दिया हुआ है 1.25 मोल पर लीटर पर सेकेंड, आपने वो कॉम्प्लिकेट करके उसको 5 से मल्टीप्लाई करके आपने बोला अपीयरेंस ऑफ सी तो 6.25 पर मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा। कैन यू सी दैट सारा? यस और नो, प्लीज टेल मी। So can Yes, you Sarah. repeat what you said? I'm saying what is the rate of appearance of C? Tell me. 1.25. आपने तो 6.25 लिखा हुआ है। 6.25 then वो क्या है? हम जो इतनी देर से यहाँ पे ऐसे गोला कर करके कर रहे थे, क्यों कर रहे थे भाई? हम जब भी हम कर रहे थे यहाँ पे इस तरह से, आई वाज सर्कलिंग दीज थिंग्स आउट, व्हाई? वो आप लोग की आप लोग तो बिल्कुल मतलब अप्लाई ही नहीं कर रहे हो। Sir, I sent the answer of the rate हाँ, of reaction in chat. वो तो हमने बोला ना आपको कि सही है आपका, आपने नहीं सुना? No, sir, it was lagging a little, so I didn't hear. अच्छा अच्छा, ओके फाइन, इट इज दैट इज करेक्ट। ओके मरियम, कैन आई, मरियम आप देखिए, why you have written 1/2 into 1.25 per mole per justify that please. Yes, Wafia, yours is correct. सारा आप फिर से कर, भेजा ही नहीं आपने? कहाँ भेजा? हाँ भेजा भेजा, दिखा दिखा दिखा, सही है आपका भी सही है। सारा Yes, sir. आप ट्राई कर पा रहे हैं? समझ में आया आपको Yes, मिस्टेक sir. क्या है? कीजिए कीजिए। मरियम, why you have written 1/2 into 1.25, explain that to me now. Oh, wait a second, अहमद, बी का होगा, हाँ करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट अहमद। फातिमा, बोला तो हमने आपका सही है, रेट ऑफ रिएक्शन इज करेक्ट फातिमा। वाफिया आपके लिए भी सही है, यू कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन, रेट ऑफ disappearance of B and rate of appearance of D. Ahmed, can you send the answers to me like as photos? Okay, sir. One. Mariam, now do you understand what is the difference between those two? आपको पता चला जो पहले किया था आपने वो गलत क्यों है? Yes, make sense? Does it make sense? Okay. सारा लेट मी नो, है ना, जब आप फिर से ट्राई करके रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लीजिएगा तो।
ठीक है, send me the answer. Okay, Wafia has sent me the other two. D का सही है and B का भी सही है. Correct, Wafia. Ahmed, I'm waiting for your photos. Sir, I sent, but it's not going. It's not going. So the rate of reaction is correct. सारा आप बात कर रही हैं. Rate of reaction. आपने rate of reaction निकाला कहाँ है? हमको तो दिख नहीं रहा है ना वहाँ पे. Expression जो लिखा आपने is equal to 1 by. Expression तो सही है आपका. लेकिन नंबर्स में भी तो वैल्यू आएंगे ना. नंबर्स में वैल्यू चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन का. नहीं स्ट्राइक कर रहा है आपको सारा? It will be 1.25. नहीं आपको नहीं रीजन रहना चाहिए ना. रीजन रहना चाहिए. आपको स्ट्राइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दूसरे क्वेश्चंस को देखिए आप. तो पहले हम लोगों ने क्वेश्चंस किए ना, उनको देखिए कैसे किया है हमने, और जो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आई है वो कैसे आई है. Got your answers. Okay. Ahmed, I have got your answers. Those are correct. Fatima, what have you calculated at the end? Can you please read it out? Rate of disappearance of A. किसने पूछा? Look at the question. Sorry. फिर से कैलकुलेट कीजिए. ठीक है. वैसे ए के लिए अगर आपने कैलकुलेट किया तो वो सही है. डोंट वरी. ए के लिए वो सही है, लेकिन हमने डी का पूछा, अपीयरेंस पूछा है. सारा नहीं स्ट्राइक कर रहा आपको? Yeah, I got it. गॉट इट नाउ. ठीक है. रेट ऑफ रिएक्शन निकाली, फिर हमको आंसर भेजिए. अच्छा, बाय द वे, वाफिया, अहमद, यू कैन लीव. एंड मरियम आपने भी भेज दिया क्या? मरियम, कैन यू कैलकुलेट फर्दर? यस मरियम. Thank you, sir. Yes, sir. I'm doing this 1 second. ओके ओके ओके. Okay, sir, I have received yours. आपने जो बी में लिखा है ना सारा, रेट ऑफ, व्हाट इज दैट? कैन यू से इट सारा? Disappearance. डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू, Minus 1. सही है वो स्टेटमेंट, आप खुद बताइए. डू यू थिंक दैट इज करेक्ट? Appearance of. हाँ, Appearance of. अपीयरेंस नहीं, अपीयरेंस नहीं, डिसअपीयरेंस ठीक है वो आपका. इज इक्वल टू के बाद सही है. यस सारा, टेल मी. See, ये सारा, टेल मी, आपको सही लग रहा है सारा? नहीं, टेल मी ना, इफ यू फाइंड दैट राइट, यस और नो.
Shouldn't be positive. इट शुडंट बी पॉजिटिव, नहीं नहीं वो बात नहीं है, वो बात है ही नहीं। आप स्टोशियोमेट्री देखिए ना, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में कभी भी स्टोशियोमेट्री लिखते हैं, यस और नो सारा? Okay, got it. ठीक है, अब देखिए सारा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, ये बताइए यहाँ पे सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया था हमने पिछले वाले रिएक्शन में, सॉरी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट किया था सबसे पहले हम लोगों ने? व्हाट डिड वी कैलकुलेट हियर? टेल मी। Rate of reaction. वेरी गुड, क्या कैलकुलेट किया था हमने? रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया था, ठीक है। सो वी विल कैलकुलेट व्हाट? रेट ऑफ रिएक्शन ओनली, ठीक है। लिसन, डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट लिसन। रेट विल बी इक्वल टू 1/2 minus delta A upon delta T, 1/3 minus delta B delta T, 1/5 delta C upon delta T, and 1/2 delta D upon delta T, ठीक है। यहाँ पे बताइए फॉर व्हाट वी हैव बीन गिवन द इंफॉर्मेशन, सारा किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? Or A, B, C. C या D? C के लिए दिया हुआ है ना। अब ये बताइए रेट इज इक्वल टू C के टर्म्स में क्या होगा? टेल मी। ये नहीं आ रहा आपको है ना सारा? आप क्या मतलब जो भी आ रहा आप बताइए आंसर, या फिर नहीं आ रहा आपको ये बताइए। In terms of C, how will I write this rate of reaction is equal to? Tell me. 1.25 divided by 5. नहीं 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 नहीं, numbers नहीं, numbers नहीं, letters में बात करते हैं अभी। R is equal to Delta C by delta T. वो होता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। देखिए ना, आपने क्या बोला है? रेट जो है इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, 1/3 ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, and 1/5 of appearance of C, and half of appearance of D. समझ में आई बात? Yes or no? Tell me. Yes. Repeat what I said. Rate is equal to half of Half of rate of appearance of A. disappearance of A, 1/3 disappearance of B. 1/5 appearance of C. ठीक ठीक, आपने क्या बोला? रेट इज इक्वल टू 1/5 appearance of C. ठीक है। अब ये बताइए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C दिया हुआ है आपको कि नहीं दिया हुआ है? Yes, sir. क्यों हो रही थी दिक्कत सारा? ये सारा आप मतलब बता सकती है क्यों हो रही थी दिक्कत? कुछ पता I लगा got कहाँ? confused. Why अच्छा, you got divided by 5? डिवाइड बाई 5 से है ना। तो देखिए इसी वजह से हम बोलते हैं, अगर आप ये बताइए, अगर आप इसको ऐसे लिख लेते दिस इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, तो मदद होती कि नहीं होती? Yes, sir. है ना, इसी वजह से हम बोलते हैं ना। जस्ट एक तो हम बहुत कम चीज लिखाते हैं आप लोगों को। प्लीज राइट वॉट एवर आई शो यू गाइस, हाउ एवर आई एम सॉल्विंग दीज थिंग्स ना, प्लीज राइट इट डाउन। ओके, व्हेन आई रिमेंबर दिस, ये हम इस वजह से लिखते हैं ना, बिकॉज दिस वाज अ थिंग दैट हेल्प मी इन 12th स्टैंडर्ड। लाइक व्हेन टीचर टॉट मी दिस थिंग, तो उन्होंने भी ऐसे लिख दिया, मतलब मैथ्स कर दिया, वहां पे आ गया रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। और दूसरी बात, केमिस्ट्री टीचर का जो रोल होता है वो यहीं तक होता है, बिकॉज उसके आगे तो मैथ्स है ना। ऑल ऑफ यू कैन सी दैट, यस और नो? Yes, sir. है ना। तो उस टाइम आप केमिस्ट्री टीचर को बोल भी नहीं सकते कि आप हमको कैलकुलेशन करके बताओ। तो बाद में फिर बैठो, खुद से समझो, जब खुद से समझा तो पता चला ठीक है। लाइक ट्रांसलेट ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। सो व्हाट इज गिवन? रेट। रेट इज इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट इज डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, नहीं बोलेंगे हम उसको। आई विल से रेट इज इक्वल टू हाफ डिसअपीयरेंस, and it is also equal to 1/3 of disappearance of B, and 1/5 of appearance of C, and 1/2 of 1/2 of appearance of D. अब देखिए ये सवाल कितना आसान हो जाता है आपके, हम बताते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। आपके पास you have got the rate, yes or no? Please tell me. सबके Yes. पास रेट क्या आ गया था? रेट इज इक्वल टू 0.25 मोल
पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ ए निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू रेट हो जाएगा। ये करना है तो 3 इंटू रेट हो जाएगा, ये करना है तो 5 इंटू रेट हो जाएगा, और ये करना है तो आपके पास 2 इंटू रेट हो जाएगा। देखिए कितना आ रहा है ये 0.5 मोल्स पर लीटर को हम लिख लेते हैं मोलर पर सेकेंड, है ना। मोलर क्या होता है, मोल्स पर लीटर। 3r इज इक्वल टू 0.75 मोलर per second. 5r is equal to what? This is all of these are what? All of these are what is this 2r? 2r is equal to rate of appearance of A. This is equal to rate of disappearance. ठीक है, आप लोग एक बार कर लीजिए, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये इक्वेशन कैसे आ रही है सारी। चलिए, आई थिंक फातिमा ने किया, फातिमा को समझ में आया होगा ये। सुनो फातिमा। Yes, sir. चलिए, सारा एंड मरियम। ओके मरियम, सही है। मरियम आपको समझ में आया जो हमने किया था अभी इक्वेशन से? Yes, sir. ओके ठीक है, So, सारा आप ही कर लीजिए। हाँ जी जी, यस so बताइए sir, मरियम। my answers are correct. हाँ हाँ, योर आंसर्स आर करेक्ट। Sure. So even my answers are correct. एक सेकंड, डी के लिए ठीक है आपका, ए के लिए भी ठीक है आपका, बी के लिए आपने नहीं निकाला? बी के लिए निकाला है पहले ना? हाँ I बी के लिए said सही है आप। हाँ बी के लिए सही है, सही सही। वेट 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 वेट, मरियम, Yes, sir. मरियम, बी में आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया हुआ। देखिए 0.25 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कीजिए आप, कितना आएगा आंसर? Sorry, sir. I thought it was 1.25. है अच्छा, Sir, 1.25 मल्टीप्लाई, I ठीक ठीक ठीक, 1.25 multiplied. अच्छा अच्छा ठीक ठीक, कोई नहीं, 0.75 आएगा। ठीक है, फिर सारा आगे होगा आपसे। Yes, sir. ठीक है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी भेजिए हमें आप, है ना। कितना आ रहा है? .75. सही है। अच्छा, एक तो हम भूल ही गए अनाउंसमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में वाइवा लेंगे हम, ठीक है। टॉपिक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस and Faraday's law.